Greetings student and welcome back to our English class. Now what are we going to do? We are going to start a new chapter and this is chapter number 5 from the book Hornbill. Now this is the chapter name is The Ailing Planet, The Green Movement's Role by Nani Palkiwala. Who has written it? Nani Palkiwala. It is actually an it was an article written on 24th of November 1994 and it was published on 24th November 1994. Now let us move forward and read about Nani Palkiwala, the introduction of the chapter, the main theme of the chapter. Okay children, let us move forward. This lesson from class 11 is based on an article published in 1994 in the Indian Express by Nani Palkiwala, telling you how the world is suffering from an ailment. Ailment is an illness, and we, the greedy human, are the cause behind its ailment. This will also help the readers to understand the crux of the article published so that little efforts can be made from each and everyone's side to provide remedies to the earth. So now you got it. Now this is what are we talking about? Sustainable development and children, how this article was published by Nani Palkiwala and what is the illness, how to how are we using our resources. Okay children. Now, the author, Nani Palkiwala, was one of the best jurists and liberal economists who described through his article how human beings are the worst animals living on the earth. Now, Nani Ardeshri Palkiwala was born on 16 January 1920 and he died on 11 December 2002. He was an Indian jurist and liberal economist, right? Now he described in this article how we as human beings are the worst animals living on this earth because we are exploiting everything, right? He also explains how we are destroying the incessantly destroying and exploiting to fulfill not our needs but our greeds. Okay, so how we are exploiting this. Okay, now how we are destroying and incessantly. What does incessantly means? This word, this means never stopping. Okay, exploiting to fulfill incessantly. What is the word? Incessantly. Exploiting to fulfill not our needs but our greed. He was a brilliant economist who had laid the foundation of economics many years back. Now, what is the main theme of the story? Okay, the theme hoti hai. It revolves around the fact that people, being greedy, have over exploited Earth's resources. This is a leading to depletion khatam hone par of many Earth's natural resources, which sooner or later shall have a great impact on us. So the message conveyed through this is that we must try our best to save our Mother Earth. Okay, by knowing more about this and creating awareness can help us a lot. Now can we move to the chapter? Okay, now children, please open your books. Now see, The Ailing Planet, The Green Movement's Role by Nani Palkiwala. Now, the following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. Okay, what is it? Relevance. Sorry children. Okay, now let us start. One cannot recall, it says, one cannot recall any movement in world history which was gripped. Gripped means clutched. Where is gripped? See, put your fingers out here. Okay, where is gripped? Here. Gripped means clutched. Okay, what does it mean? Clutch. Okay,
Children, got it? The imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. Okay, तो उसने क्या बोला है कि the chapter Ailing Planet, the Green Movement role, okay, ये क्या बोल रहा है कि it was published in 24th November 1994, and the Green Movement, which started nearly 25 years ago from 1994, spread so quickly in the world history. The world's first nationwide Green Party was found in New Zealand. ठीक है? Since then, it says the movement has not looked back. तो ये एक पहला मूवमेंट था जो नेशन वाइड ने इम्पोर्टेंस गेन की और कहाँ पर फाउंड करा, न्यूजीलैंड में. तो वो क्या बोलता है कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन हिस्ट्री विच हैज़ क्लच द इमेजिनेशन ऑफ, क्लच मतलब हम इन पूरे ह्यूमन रेस की कभी इमेजिनेशन एक साथ नहीं हुई है सो कम्प्लीटली सो वाइडली एज द ग्रीन मूवमेंट. Now, what is green movement? Where is green movement? It is here, children. Now, it is a movement which stressed upon the follow environmental friendly, friendly things, right? It laid emphasis, it laid stress on the environment friendly things, right? And where was it founded? In New Zealand. Since then, the movement not looked back, and it has not ever looked back. Next paragraph. Okay, now let's move to the next paragraph. We have shifted one hopes. Irrevocable. Irrevocable, children, irrevocable in a way that cannot be changed or reversed. Irrevocable मतलब change होना. Irrevocable मतलब in a way that cannot be changed. ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? Irrevocable, that cannot be changed. Okay, so we have this word done. From the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. उसने बोला we have shifted one hope. So it is saying that we have shifted one hopes to the irrevocable. It cannot be changed back from the mechanistic views मतलब जो machine के views, ठीक है, with the views that we use machines, to a holistic. It means a view for the preservation of the environment. ठीक है, holistic and ecological view मतलब it means a view for the preservation of the environment. It also refers to the understanding of importance of Earth's resources for the use of future generation. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? It also refers to understanding of कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को, ठीक है, अर्थ रिसोर्सेस को कैसे यूज़ करने चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी ये सारे के सारे रिसोर्सेस मिले ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस. ह्यूमन परसेप्शन का भी क्या है? एक perception है. It has shifted the human perception as revolutionary, evolving a complete change. पहले हम क्या करते थे? हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिप्लीट करते थे, बट अब क्या हो गया? एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू के कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी चाहिए, तो हमारी जो ह्यूमन परसेप्शन है वो चेंज हो चुकी है. एज अ रेवोल्यूशनरी का मतलब है विच इवॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपर्निकस. अब ये किससे, हमारा जो चेंज है वो किससे रेफर कर रहा है? कोपर्निकस से. अब कोपर्निकस कौन थे? उन्होंने क्या किया था? राइट,
उन्होंने बेटा who taught mankind in the 16th century that earth and other planets revolve around the sun. पहले क्या माना जाता था कि the planets are fixed and the sun revolves around the planet. Okay, now it has been found, yeah, Copernicus found that the sun is fixed and the planets revolve around the sun. Okay, are you you can understand till here? Now he's talking that the perception, the view has changed, like Copernicus has changed the views, okay, regarding planets and earth. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that earth itself is a living organism. Okay, earth is an living organism, and enormous means huge being of which we are parts, and since then we are the parts of earth. Okay, so we have changed our perception. Okay, now it has its own enormous being of which we are parts. Okay, now what does it say? It has its own metabolic needs. Now what is metabolic? Metabolic means needs of living organism that enables to have a chemical process that causes food to be used for the growth and energy. Now what is metabolic needs, children? Right, needs of a living organism that enables them to have a chemical process that causes food to be used for growth and energy. Okay, and vital process which needs to be respected and preserved. Vital, very important process which needs to be respected. We should respect it and preserve. Preserve means to protect. तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है? That the earth's vital sign reveal a patient is declining health. We have began to realize our ethical obligation. हमने realize करना शुरू कर दिया है कि क्या हमें क्या करना चाहिए. इन चीज़ों को एथिकली हमने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि हमारी अगर हमने प्रिजर्व नहीं करा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को कभी क्या नहीं मिलेगा. जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को कभी भी नहीं मिलेगा. और हमने इसको किससे कंपेयर किया है? कॉपरनिकस से. ओके, now the next paragraph, the earth's vital signs, okay, reveals the earth's vital signs reveal a patient in declining health. The earth's vital important, okay, signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations. What is ethical? When someone is required to do something based on righteousness and स्टैंडर्ड्स ऑफ रूल. जब हम बोलेंगे ये करेक्ट है, एथिकली ये सही है, सच झूठ में जब कोई चीज़ सही होता है स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग. टू बी गुड स्ट्यूवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड responsible trustees of the legacy of the future. Now stewards manage or to look after. Now he is saying that the earth's vital signs reveal a patient in declining health. Okay, अब अर्थ को किससे कंपेयर किया गया है? एक पेशेंट से करा गया है. ठीक है, कि अर्थ इज नाउ इज लाइक अ पेशेंट हुज हेल्थ इज declining. Right, we as human beings are not realizing our duty to be a good managers of the planet. तो हम एज ए ह्यूमन बींग क्या सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या है, एक गुड मैनेजर्स हैं. ठीक है, ऑफ द प्लानट एंड टू बी द रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज. ठीक है, एंड वी शुड बी द रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज. Okay, to conserve the environment so we can pass a legacy for the future generation. ठीक है, अगर हमने ये चीज़ें स्टॉप नहीं करी या हमने रिजर्व नहीं करा, प्रिजर्व नहीं करा, तो हमारे क्या है, फ्यूचर जनरेशन को, चिल्ड्रन, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेगी. नाउ ओके, now the concept of sustainable development, economic development without the depletion of natural resources.
ठीक है, ताकि हम अपने नेचर को हार्म ना कर सके. हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट हम अपने नेचर को हार्म ना कर सके. ओके चिल्ड्रन, was popularized in 1987. कब था? 1987 by World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea of development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generation would need. अब वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन? वो सिंपल स्ट्रिपिंग लेस. स्ट्रिपिंग का मतलब देखो, सॉरी, क्लियर और मूव. स्ट्रिपिंग मीन्स क्लियर और मूव. ओके, नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट हम अपने जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म नहीं करेंगे. ठीक है, बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द रिपोर्ट्स. ठीक है, उनके रिपोर्ट्स के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज द टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट. उनकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या करना चाहिए कि जो आजकल की प्रेजेंट जनरेशन की नीड है, ओके, उनको फुलफिल करना चाहिए. नीड, वांट नहीं, इच्छाएं नहीं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग, हमें कुछ चीज़ वेस्ट नहीं करनी है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है विद नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन मीट देयर नीड्स. ठीक है, सो दैट फ्यूचर जनरेशन को भी ये मिलता रहे. हमें इतना प्रॉपरली इन चीज़ों को यूज़ करना है. आर यू क्लियर? ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द जू of Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads. So, in the zoo of Lusaka, Zambia, there's a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness have been dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Now, in the zoo of Lusaka, and where it is in Zambia, there's a cage. Cage एक गुफा है, where the notice, ऊपर notice लिखा है the world most dangerous animal. ठीक है, और जैसे ही हम अंदर जाते हैं वहाँ पर कोई एनिमल नहीं है बट मिरर है जहाँ पर हम अपनी शक्ल देख सकते हैं. इसका मतलब हम क्या हैं? सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स कौन है? हम हैं. ठीक है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज. तो उसने क्या करा है? उसने थैंक्स ऑफ द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज को थैंक किया है. राइट, अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड. व्हाट डज डॉन्ड मीन? बिगन. ठीक है, डॉन्ड मीन्स बिगिन. यहाँ पर डॉन्ड का मतलब क्या है? बिगिन. अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. ठीक है, अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. तो मोस्ट डेंजरस एनिमल किसे बोला गया? हम इंसानों को. विद द एफर्ट्स ऑफ न्यू एजेंसीज इन द वर्ल्ड, नाउ ह्यूमन बीइंग्स आर सीन एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल. सारी एजेंसीज ने क्या करा है? हमको क्या बताया? हम ह्यूमन बीइंग्स को एज अ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स करा है. They have realized the importance of shifting to a new system based on partnership. तो उन्होंने एक they have realized, उन्होंने रियलाइज करा है कि हमें क्या करना चाहिए? एक सिस्टम बनाना चाहिए. किस चीज़, क्या नाम होना चाहिए सिस्टम के? दैट इज पार्टनरशिप. ओके, क्लियर टिल हियर? नाउ साइंटिस्ट हैव cataloged, classified about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely. So estimates vary widely as regards and still uncatalogued living species. Biologists reckon means calculate, that about
to 100 million other living species still languish, lose or lack of vitality of a person or a plant or animal, which grow weak. Okay, so what is languish? It is a loss or lack of vitality of a person or a plant or animal. Okay, क्या है? Loss or lack of vitality of a person or plant or animal. Unnamed in ignominious darkness. What is ignominious darkness? Discard, ठीक है, disgraced as no one has knowledge about it. ठीक है, क्या है? Disgraced as no one has knowledge about them. तो उसने इस चीज में क्या बोला है चिल्ड्रन? That they have realized the importance of shifting to a new system based on partnership. अब partnership क्या होनी चाहिए? Humans share the earth with about 1.4 million living species according to the classification of scientists. आगे समझ में? Biologists calculate that there are still millions of other species which are yet not classified due to the weakness or due to the lack of knowledge about them. ठीक है, हमें 1 million species का क्या है, हम क्या शेयर करते हैं, अपनी जो अर्थ है उसको शेयर करना है. बट ऐसे कई मिलियन स्पीशीज़ हैं, बहुत मिलियन स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में या तो क्लासिफाई नहीं हुए हैं, राइट, और या तो फिर हम ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम इसको हम उन मिलियन स्पीशीज़ को क्या कर रहे हैं, डिस्कवर नहीं कर पाए. Right, now next paragraph. Okay, now next paragraph. One of the early international commission which dealt with inter alia among other things, okay, with the question of ecological and environment was the Branded Commission, which has distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Branded report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet or advancing desert or impoverished landscapes and ailing environment? तो children, सिंपल सा पैराग्राफ है जो हमारा ब्रांडेड कमीशन था. इट वाज वन ऑफ आर सबसे अर्ली इंटरनेशनल कमीशन था, सबसे अर्ली इंटरनेशनल कमीशन था जो कि किस क्वेश्चन को डेल्ट करता था, इन क्वेश्चन रिगार्डिंग इकोलॉजी, क्वेश्चन रिगार्डिंग एनवायरनमेंट. नाउ द कमीशन मिस्टर एल.के. झा जो कि वन ऑफ द कमीशन मेंबर्स थे, ठीक है, हु वॉज ऑल्सो एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, उनकी फर्स्ट रिपोर्ट रेज्ड अ क्वेश्चन. उनकी फर्स्ट रिपोर्ट में एक क्वेश्चन रेज हुआ कि आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स, हमारे सक्सेसर्स कौन है, हमारे बच्चे और उनके आने वाले बच्चे, अ स्कॉच्ड प्लैनेट, अ बर्न्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, जो हमारा क्या होना चाहिए था, हरा भरा अर्थ होना चाहिए था, उसको क्या हम एडवांसिंग क्या करते हैं, हम उसको डेजर्ट की तरह चेंज कर दे. इम्पोवेरिश्ड लैंडस्केप्स, पुअर लैंडस्केप्स एंड पुअर हेल्थ एनवायरनमेंट. ठीक है चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इट इज़ वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन किससे डील करा था, एक क्वेश्चन से, अमंग अदर थिंग्स से, ठीक है, कि किस क्वेश्चन से, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट ने. और इस कमीशन का नाम क्या था, ब्रांडेड कमीशन था. और इनका जो एक मेंबर थे कमीशन के, एल.के. झा ने, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन उठाया था कि जो हमारे सक्सेसर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, क्या हम एक ऐसे प्लैनेट में रहेंगे जो कि बर्न है, एडिड है, ठीक है, या एक पुअर हेल्थ एनवायरनमेंट में अपने फ्यूचर जनरेशन को डालेंगे. Right, now thank you children, you can we'll complete the chapter in the next video. Thank you children.